Hello, welcome to guys on my channel. Today we are going to read our chapter number 12 of biology ecosystem. तो हम जल्दी से जल्दी अंडरलाइन करते जाएंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी कि आपको जल्दी से जल्दी मैं करा दूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ। इकोसिस्टम क्या है? आई थिंक टाइम पे चलते हैं, इसको बैक कर लेते हैं। Ecosystem can be visualized as functional unit of nature. ठीक है, important. ठीक है, ecosystem varies greatly in size from a small pond to the large forest to a sea. ठीक है, अब एक important point again. Many ecologists oh shit, I think I should back it. अब की important line है, many ecologists regard that entire biosphere as a ecosystem, as a composite of all local ecosystem on earth. ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि बायोस्फीयर को भी हमने इकोसिस्टम माना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला है कि इतनी बड़ी अर्थ को तो हम पढ़ नहीं सकते, तो हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसमें है पहले हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, देन हमारे पास है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमारे पास आता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, बस नॉट सम एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल। देन हमारे पास आती है पॉन्ड, लेक, wetland, river, and usually are some example of aquatic ecosystem. अब यहाँ पे हमने बात की है थोड़ा सा मैन मेड की, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्रॉफील्ड एंड एक्वेरियम आर मे also be considered as man-made ecosystem. As man-made ecosystem. अब हम देखते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोडक्टिविटी, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, फूड चेन वेव बाय ग्लूटेन साइकिल। ठीक है, एनर्जी के फूड के एक ऑर्गेनिज्म से कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो रही है, देन आउट हमें क्या मिलता है। ठीक है, डिग्रेडेशन और एनर्जी लॉस। अब हम बात करते हैं कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में। तो इस रिलेशनशिप में हम देखेंगे फूड साइकिल, फूड चेन, वेव। अब ये किससे रिजल्ट, ये एनर्जी फ्लो का रिजल्ट है। अब
Then we move on. Then here we move on ecosystem, structure and function. ये फर्स्ट पैरा में जनरल बातें की हैं, आप पढ़ लेना, ठीक है। एक बार देखिए, ये बहुत जनरल बातें की हैं, या फर्स्ट पैरा पढ़ लेना, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ना, ठीक है। हम सेकंड पैरा से ध्यान देते हैं, एक काम करते हैं, हम सेकंड पैरा से स्टार्ट करते हैं। इसको ये हो नहीं रहा, अब देखो interaction of biotic and abiotic components result in physical structure that is characteristic for each type of ecosystem, ठीक है, which is very important। अब ये बोल रहा है एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में भी जो इंटरेक्शन होता है वो रिजल्ट करता है एक फिजिकल स्ट्रक्चर को, इकोसिस्टम के और उसके कैरेक्टरिस्टिक को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, identification and enumeration of plant and animal species of ecosystem gives it species composition। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली एज इट इज क्या आ जाता है, हम बात करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन की। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट होता है डिफरेंट स्पीसीज का एट अ पर्टिकुलर टाइम और एट अ पर्टिकुलर स्पेस, ठीक है। इसमें देखो अंडरलाइनिंग, द वर्टिकल distribution of different species occupying different level of stratification. Example, tree occupied topmost sterile layer for shrubs, second herbs, ये तो ठीक है। अब हम बात करते हैं the components of ecosystem, the component of ecosystem that are functional unit of following aspects। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। हम इसको समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल, जो कि क्या है,
really सेल्फ सस्टेनेबल है, shallow water body है, in which all the above mentioned four basic components of ecosystem are well exhibited. And the abiotic component is the water with all dissolved inorganic and organic substances and the rich soil deposit at the bottom of the pond. The solar input of the cycle of temperature, day, length, and other climatic conditions regulate the rate of function of entire pond. The autotrophic component the autotrophic component include the phytoplankton, some algae, and the floating submersible plant found at the edges. The consumers are represented by the zooplankton, free swimming, and the bottom dwelling forms. The decomposers are fungi, bacteria, flagellated species abundant in the bottom of the pond. This system performs all the functions of any ecosystem of the biosphere as a whole. The conversion of inorganic into organic material with the help of radiant energy of the sun by the autotrophs, consumption of autotrophs by heterotrophs. अरे भाई